प्रोग्राम रन होता है तो ट्रैक रखा जाता है, राइट। अगर मेन मेथड किसी और मेथड को कॉल कर रहा है तो ये मेन मेथड, उसके ऊपर दूसरा मेथड, अगर वो मेथड किसी और कर रहा है तो वो ऊपर तीसरा मेथड, तो क्या स्टैक बन रहा है, हम बढ़ चुके हैं। पहले तो ये एग्जांपल हटाते हैं ना, लिख सकते हैं। हमने देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर वो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे हमने ई लिखा है, इसको तो नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है, ये तो वेरिएबल का नाम है, रेफरेंस का नाम है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने अभी पढ़ ली हैं। अच्छा, अब देखिए एक और चीज, ट्राई के अंदर एक और ट्राई डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। पहले तो ये एग्जाम्पल हटाते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, इसको हटाइए एक सेकंड के लिए, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने एक मेथड लिखा है लेवल 3, ठीक है। एक एरे मैंने डिक्लेयर करी है खाली 5 लेंथ की है, और एरे 5 मैंने टाइम डाल दिया है। हमें पता है 0 से 4 तक इंडेक्स हम एक्सेस कर पा सकते हैं यहाँ पे, और हमने 5 लिख दिया, तो यहाँ पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। ओके, एक और मेथड लिखता हूं मैं लेवल 2। लेवल 2 कुछ नहीं कर रहा है सर, लेवल 2 लेवल 3 को कॉल कर रहा है, दैट्स इट। एंड एक मेथड है लेवल 1, लेवल 1 भी कुछ नहीं कर रहा है सर, लेवल 1 लेवल 2 कॉल कर रहा है, लेवल 2 लेवल 3 कॉल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन क्या कर रहा है सर, मेन कर रहा है लेवल 1 को कॉल, ठीक है। तो देख रहे हो, लेवल 1 कॉल हुआ, लेवल 1 में लेवल 2 कॉल किया गया, लेवल 2 में लेवल 3 को कॉल किया गया, एंड देन लेवल 3 में ये कोड लिखा हुआ है। चलाते हैं सर इसको, रन हुआ, एक्सेप्शन आ गया। अब देख रहे हो, इस कहानी को पढ़िए, हमें समझ में आया कि हाँ भाई ये एक्सेप्शन आया है, इंडेक्स 5 जो है आउट ऑफ बाउंड्स है, किसमें, एक एरे में जिसकी लेंथ 5 है, 0 से 4 आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने हैंडल नहीं किया, जेवीएम ने एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम जो है एब्रप्टली रुक गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्शन आया है लेवल 3 में, जो कि कॉल करा है किसने, लेवल 2 ने, जो कि कॉल करा है किसने, लेवल 1 ने, जो कि कॉल करा है किसने, मेन ने, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है लेवल 3 में आया, ठीक है। ये एक्सेप्शन प्रोपगेट हो गया किसमें, लेवल 2 में, क्योंकि लेवल 2 लेवल 3 वर्क कर रहा है। लेवल 2 में एक्सेप्शन आ गया, तो ये एक्सेप्शन प्रोपगेट हो गया लेवल 1 में, ठीक है। और लेवल 1 में जो एक्सेप्शन आया है वो प्रोपगेट हो गया कहाँ पे, मेन मेथड में। और क्योंकि हमने कोई ट्राई कैच नहीं लगाया है तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, और एक्सेप्शन जो है कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको ट्राई कैच कर भी देता हूँ और प्रिंट भी कर देते हैं तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, राइट। ट्राई यहीं पे कर लेते हैं, कहीं पर भी कर सकते हो आपकी जहाँ इच्छा हो, राइट, जहाँ आपका बिजनेस लॉजिक जो है, रिक्वायरमेंट जो है आपको दे रहा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो ओके, मैं अगर यहाँ पे चलाता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज आया है, ठीक है, मैसेज आया और कुछ नहीं आया। लेकिन अगर मैं ट्राई कैच नहीं चलाता हूँ तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हुआ है, ये आ रहा था मैसेज में, है ना, ये इतना। ये क्या है सर, इसको बोलते हैं स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट मेथड कॉल्स दैट लेड टू एक्सेप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सर फ्लो क्या है। देख रहे हो कि सर लेवल 3 में आया एक्सेप्शन, जो कि प्रोपगेट हो गया लेवल 2 में, देन लेवल 1 में, देन मेन में आ गया। ओके, स्टैक ट्रेस का मतलब क्या है, क्यों बोल रहे हैं स्टैक्स को, क्योंकि सर ये एक स्नैपशॉट है, किसका, कॉल स्टैक का स्नैपशॉट है। हमें पता है कि जब एक प्रोग्राम रन होता है तो ट्रैक रखा जाता है, राइट। अगर मेन मेथड किसी और मेथड को कॉल कर रहा है तो ये मेन मेथड, उसके ऊपर दूसरा मेथड, अगर वो मेथड किसी और कर रहा है तो वो ऊपर तीसरा मेथड, तो क्या स्टैक बन रहा है, हम पढ़ चुके हैं रिकर्जन में, राइट। तो ये क्या, ये स्टैक है, उसकी फोटो है सर कि किस मेथड ने किसको कॉल किया और कहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है। और आप देखो, अगर मैं इसको ट्राई कैच में करता हूँ, देखिए ट्राई एंड देन नीचे कैच
एक्सेप्शन ई की जगह आप मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ ये तो नाम है। ओ डॉट देख लो गेट स्टैक ट्रेस ऑल्ट एंटर स्टैक ट्रेस एलिमेंट की एरे है, ठीक है। और अगर मैं देखो इसको प्रिंट करता हूँ SOUT लूप लगा लेते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन स्टैक ट्रेस डॉट लेंथ i प्लस प्लस देन SOUT स्टैक ट्रेस i। तो देखो अगर मैं रन करता हूँ तो देख रहे हो एग्जैक्ट चीज प्रिंट हुई है जो वहाँ पे हमें दिख रही थी, यहाँ पे हमने खुद ने प्रिंट करवाई है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस सही से फिनिश हुआ है, वहाँ पे टर्मिनेट हो गई थी प्रोसेस ऑटोमेटिकली, क्यों कि एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। इस जुगाड़ को छोड़ो, o डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ये मैथड चला दिए, सेम चीज आ जाएगी, ये आ गया। ओके हैंडल भी हुआ है, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे और भी मेथड्स हैं, गेट मैसेज, ठीक है, तो हमने देखा अभी। अब देखिए जितने भी हमने एक्सेप्शन अभी तक पढ़े हैं उसमें कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ a इज इक्वल टू नल एंड a डॉट सेट id करता हूँ 1 2 3, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, लेकिन कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट। इसका मतलब है कंपाइलर के द्वारा ये चेक नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसकी सर दी These exceptions are not being checked at compile time, ठीक है। जैसे नल पॉइंटर जैसे कि यहाँ पे है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, ये सब क्या है अनचेक्ड एक्सेप्शन, हमने देख भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल होगा बढ़िया, रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगा, ओके। लेकिन कुछ एक्सेप्शन इस तरह के भी होते हैं जो कंपाइल टाइम पर चेक किए जाते हैं, उनको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। जैसे कि अभी हमने फाइल के साथ हैंडल करना सीखा नहीं है, राइट, कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक टेक्स्ट फाइल दी, उसको रीड करना है, ये सब हमने अभी सीखा नहीं है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, ये सब होता है फाइल रीडर की हेल्प से। फाइल रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर एंड हम दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे नाम दे दिया मैंने a.txt, ओके, सर फाइल का नाम है, सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है तब भी एरर आ रही है ना। वो बाद की बात है कि फाइल रीडर से कैसे रीड करते हैं फाइल, वो सब बाद की बात है, जब हम फाइल्स के साथ खेलेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसी में एरर आ रही है, और एरर क्या आ रही है देखिए, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन java.io.file not found एक्सेप्शन। कह रहा है कि सर एक्सेप्शन आ सकता है, आपने हैंडल नहीं किया है, आप हैंडल कर लीजिए। हैंडल कर लेते हैं सर, ट्राई कैच में जैसे ही लिखोगे आप इसको तो एक्सेप्शन जो है वो चला जाएगा। हमने पेरेंट क्लास डाल दी है एक्सेप्शन की, IO एक्सेप्शन नहीं डाला है, ठीक है, देखो एरर चलेगी, ओके। कंपाइल अब हो जाएगा, पहले नहीं होता, सही बात है। होता क्या है बताता हूँ, इसको एक बार बाहर ही लिखते हैं, यहाँ देखिए java.io फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर देखो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक लिखूंगा ना तो अब एरर है, क्यों, क्योंकि आपने कैच नहीं किया, सही बात है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चलो IO एक्सेप्शन, तब आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फाइल नॉट एक्सेप्शन जो है वो IO एक्सेप्शन के सब क्लास है, अंडर आ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक्सेप्शन तो भाई सबकी क्या है, सुपर क्लास है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आप लिख ही सकते हो। ये क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन, जो कि चेक किए जाते हैं बाय कंपाइलर। आपको फोर्सफुली बोला जाएगा कि सर सुनिए, काफी ऑब्वियस चीज है, हो सकता है कि फाइल ना हो ये a.txt, तो कोड जो है कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए, ट्राई हैंडल कर लीजिए, या फिर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको हटा, ट्राई कैच को या तो ट्राई कैच लिखिए, या फिर देखो यहाँ पे एक मेरे को बोला जा रहा है कि ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, ये कर दो। ये क्या है, ये तो नया कुछ। ट्राई कैच तो सुना था, मल्टीपल ट्राई कैच हो सकते हैं, ट्राई के अंदर एक और ट्राई कैच भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ
दिक्कत नहीं है। जैसे नेस्टेड इफ नेस्टेड लूप हो सकते हैं, ऐसे नेस्टेड ट्राई कैच भी हो सकते हैं, मल्टीपल कैच हमने देख लिया। लेकिन ये क्या है, मेथड के सिग्नेचर में है ना, यहाँ पे मैंने थ्रोज और यहाँ पे एक्सेप्शन, वही चीज है। फाइल नॉट फाउंड की जगह मैं एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन है क्या सर ये थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या है सर? या तो आप ट्राई कैच करते हो, या तो कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए, ट्राई हैंडल कर लीजिए, हैंडल कर लीजिए। या फिर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको हटा, ट्राई कैच को हटा, या तो ट्राई कैच लिखिए, या फिर देखो यहाँ पे एक मेरे को बोला जा रहा है कि ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, ये कर दो। ये क्या है, ये तो नया कुछ। ट्राई कैच तो सुना था, मल्टीपल ट्राई कैच हो सकते हैं, ट्राई के अंदर एक और ट्राई कैच भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे नेस्टेड इफ नेस्टेड लूप हो सकते हैं, ऐसे नेस्टेड ट्राई कैच भी हो सकते हैं, मल्टीपल कैच हमने देख लिया। लेकिन ये क्या है, मेथड के सिग्नेचर में है ना, यहाँ पे मैंने थ्रोज और यहाँ पे एक्सेप्शन, वही चीज है। फाइल नॉट फाउंड की जगह मैं एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन है क्या सर ये थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या है सर? या तो आप ट्राई कैच करते हो, या तो आप क्या करते हो, इसके कॉलर को रेस्पॉन्सिबल कर देते हो कि सर ध्यान रखना ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। आई बात में आपको याद होगा, हमने देखा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर एक्सेप्शन हैंडल कर लिया। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड में ट्राई कैच कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर हम अवेयर करवा सकते हैं टू द कॉलर कि सर सुनिए, ये जो मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अब देखिए ये क्या चेक्ड एक्सेप्शन है, या तो इसमें ट्राई कैच लगाइए, या फिर इसके मेथड में जहां भी ये कॉल हो रहा है उसके मेथड में लिखिए थ्रोज विद एस, ठीक है, एस के साथ, कि सर सुनिए ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो आप हैंडल कर लीजिए। आप कौन है इस केस में? इस केस में कोई नहीं है, जेवीएम है डायरेक्ट। लेकिन अगर कल को मान लेते हैं, इसको हटाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तभी तो फेड हो गया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड फंक करके बोल देते हैं कि फंक्शन मेथड कुछ बोल दीजिए, मेथड 1 बोल देते हैं। चलिए मेथड 1 ये कर रहा है, a.txt को रीड करेगा यहाँ पे, ठीक है, बाद में कुछ करेगा, अभी तो बस फाइल रीडर को ऑब्जेक्टिव बनाया है, ठीक है। अच्छा कुछ करेगा, अच्छी बात है, करने दो। लेकिन ये क्या रहा है, एरर आ गई है। इसे या तो ट्राई कैच करिए, या तो मेथड सिग्नेचर में यहाँ डाल दीजिए थ्रोज, कुछ भी, फाइल नोट डाल देते हैं, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। अब जो इसको कॉल करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे भी हैंडल करे उसको। जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 2 और वो मेथड 1 को कॉल करता है। अब देखिए जैसे ही मैंने मेथड 1 को कॉल कराया तो एरर आने लगी कि सर सुनिए मेथड 1 जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेथड 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो सिर्फ ट्राई कैच लगाइए, अपने कॉलर को बता दीजिए कि सर सुनिए सतर्क हो जाइए कि मैं एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ, है ना, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड। अब देखो यहाँ से एरर चली गई, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बता रहे हैं कि सर कोई ना कोई तो हैंडल कर लेना, नहीं करा तो ऑब्वियसली जेवीएम को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे मेथड 2 चलाता हूँ और यहाँ पे थ्रोज लिख देता हूँ, थ्रोज IO एक्सेप्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जेवीएम हैंडल कर रहा है, देख रहा हूँ एरर आ गई, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, राइट, टर्मिनेट हो गया। अगर मैं SOUT करता हूँ यहाँ पे हेलो, तो हेलो जो होगा वो प्रिंट नहीं होगा सर, देख रहा हूँ कहीं ना कहीं तो आपको ट्राई कैच लगानी चाहिए, राइट, ये चीज, ओके। और ये पूरा स्टैक ट्रेस है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैसेज आया, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड फाइल स्पेसिफाइड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने लिखा है थ्रोज IO एक्सेप्शन, थ्रो करता है, ये हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, लेकिन करेगा। अगर फाइल नहीं हुई तो वही लिखा हुआ है ना, मेथड 2 ने मेथड 1 को कॉल कराया, मेथड 1 ने लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है मैंने a.txt, यहाँ पे ऐसी कुछ फाइल है नहीं यहाँ पे अभी हमारे, ठीक है। तो फाइल नॉट फाउंड, इसीलिए इसने एक्सेप्शन थ्रो किया। अगर फाइल होती तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता, सिंपल सी बात है, ओके। तो सर ये है चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। एंड हमने देखा है कीवर्ड थ्रोज, ओके। एक और कीवर्ड है थ्रो, उसको भी देखते हैं। एक काम करते
Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So today we will be solving the problem combination sum 2 from the SDE sheet. But before moving on to the problem, if you guys are new to our channel, please do consider subscribing to our channel. So the problem states that you'll be given a collection of candidate numbers and you'll also be given a target number. And your task will be to find all the unique combinations in that array candidates where the candidates do sum up to the given target. Now there are something that you need to take care of. Each number in the candidates can only be used once while making the combination. The next stuff is the solution set must not contain duplicate combinations. So you can see that this is the given candidates array, which is 10, 1, 2, 7, 6, 1, 5, and the target is given as 8. So one of the possible combinations can be 1, 1, 6. The other possible combination can be 1, 2, 5. So what you need to return is basically everything in the sorted order, and whatever combinations you are getting, all of them should be in the lexicographical sorted order, and you need to return them. So you can see there is a combination 1, 2, 5. So either I pick this one, then I pick this 2, then I pick this 5. So I will get a 1 to 5, or either I pick this one and then this 2 and then this 5. This can be also another 1 to 5, but if there are multiple combinations, you can just pick once. So that is the problem. So for this example, if you are asked to find the target equal to 4, the combinations will be 1, 1, 2, and the other combination will be 2, 2. Now you cannot say 1, 2, 1 as a combination. That is not valid because all the combinations should be in the sorted order. So once they are in the sorted order, you will only get these two combinations, and this is what you need to return. Now again, this one, and this 2 can form a 1, 1, 2, or this one, and this 2 can form a 1, 1, 2, but it doesn't matter. You just need to return the one combination that gives 1, 1, 2, no duplicate combination. So this problem is basically the second version of the combination sum. So to solve this problem, the brute force that we will be following will be inspired by the part 1 of the combination sum. So let's discuss the brute force. If you want to understand the brute force, it's mandatory that before starting off with this explanation, you should have seen the combination sum 1 video that I have already made. So if you haven't seen it, pause this video, go and check it out, and then you can come back. If you have seen that video, you remember that we were allowed to pick an element once. So that is why when we pick the element from index, we always move to the index because we can pick the element once more. And whenever there was the other case of not picking, we can move to the next, that is index plus 1. So the transitions were like this in combination sum 1. But in this combination sum 2, the question states that we cannot pick an element more than once. So if you are picking the element, will you stay at the same index? Obviously not. You will move to the next index that will make the state as index plus 1. It will make the state as index plus 1. And that is the only change that you need to do in order to get all the combination that does give you the sum target. From index, you just need to move to index plus 1. Because once you have picked the index, you cannot repeat it. You cannot pick it once more. So that is why to index plus 1. So if I look at the code for combination sum 1, the only change that I need to make will be over here plus 1. While picking, I will move to the next index instead of staying at the same index. But we will still miss something. Since we are carrying a list, it will not avoid the duplicates. So probably you can carry a hash set of list and you can pass a hash set over here. And once you have called this recursion, after this, that hash set can be converted, to a list of list, and then you can return this list, then return the list. So this will become something like hash set. I'm just writing a set as of now. So this can become a set. So if you add it to the set, so it will make sure that duplicate combinations are not stored. So if you remember the time complexity discussion that we did, not stored.
return this list, then return the list. So this will become something like hash set. I'm just writing a set as of now. So this can become a set. So if you add it to the set, so if you remember, it will make sure that duplicate.
then this 2, and then this 5. The discussion that we staying at the same index, but we will still miss something. Since we are carrying a list, it will not avoid another data structure. But now the time taken will be k log n. Why will that be? Because you're putting a data structure k that will take a length k, but you're putting it into a set now, so that's gonna take an extra log n. So I can say if you follow this method, the time complexity of brute force will be 2 to the power n into k into log. We are going to try to pick subsequences. Yes. So let's see how we are going to start off it. So imagine you have a function. Okay. So assume you're starting with the 0th index and you have a target of 4 that you need to make, and you have an empty data structure. So if I ask you, can you start with the 0th index? Your answer will be yes. Can you start with the first index? Again, your answer will be yes. Can you start with the second index? Your answer again will be yes. Can you start with the third index? Yes. Can you start with the fourth index? Yes. Now when I say start, what does that mean? That means if you start with this 0th index, you are getting the first element of your combination as 1. Assume after that you decided to pick this third index, you get a 2, and after that you decided to pick this fourth index, you again get a 2. So probably you can decide to pick a combination in this way. So whenever I am starting with the 0th index, I can pick the 0th index. There can be a possibility. Or I can pick the first index. Again, there can be a possibility of picking up the first index. I can also pick the second index. And similarly, I can also pick the third index. And again, going by, I can also pick the fourth index. So these are the 5 possibilities that I can pick up as the first element. Now let me ask you one thing. If you're thinking of picking someone as your first element, so even if you pick the 0th index guy as the first element, or the first index guy as the first element, or the second index guy as the first element, will that matter? Obviously not. If you're picking 0th, first, second, doesn't matter. You're ultimately picking 1 as your first element of the combinations. So this is where you have your trick, which makes sure that duplicate combinations are not picked while recursion. Now you will understand this as I start writing the recursion tree in depth. So I decided to pick the 0th index, which will mean that since I've picked the 0th index, I will move to the first index, and my target, which was 4, will now be reduced to be 3, and my data structure will have an element 1. Now I will not perform this recursion. Similarly, I will not perform this recursion because I've already started with someone who is starting with 1. So there's no point starting with these guys again. That will give me repeated combinations. Now for the third index, can I pick 2 as the starting element? Obviously I can. So if I pick it up, my data structure will obviously have the element 2. What about my target? If I'm picking someone which is a value 2, my target will get reduced by a value 2. Hence, it will be reduced to 2. What about the index? Now remember one thing. You require all the combinations in the sorted order. Like the combination must be like 1, 1, 2, not 2, 1, 1. So make sure whatever array is given to you, you sort it, and after that you start preparing combinations by recursion so that you only get the combinations in sorted order. So if you have picked up 2 and you're looking for a sorted combination, like the combination, if I'm picking someone which is a value 2, my target will get reduced by a value 2. Hence, it will be reduced to 2. What about the index? Now remember one thing. You require all the combinations in the sorted order. Like the combination must be like 1, 1, 2, not 2, 1, 1. So make sure whatever array is given to you,
you sort it, and after that you start preparing combinations by recursion, so that you only get the combinations in sorted order. So if you have picked up 2 and you're looking for a sorted combination, you are not going to pick up anything from the left, obviously. So you will decide to pick elements from the right. So that means you'll move to the 4th index. That is very obvious, because if you have picked the 3rd index guy as the first element, the next elements will be picked from the right. Now, will you pick the 4th index as your starting element again? Obviously not, because you already have picked someone which is a value 2, which is your starting index. So I will decide that I am not going to pick. So this guy will not be picked. So as of now, yes, as of now, we have these 2 recursion calls which will be made. And at first, this recursion call will be executed, and after that this. So let's execute this portion.
करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे थ्रोज नहीं लिखते हैं तो एरर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई कैच लगा देता है, मोर एक्शन सराउंड विद ट्राई कैच, आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने कुछ नहीं किया, देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, सब इंटेलिजेंट लिख दिया है और मैं यही लिखने वाला था। ट्राई कैच लग गया है तो मैं कुछ कर देता हूँ सर, कुछ कर देता हूँ, यहाँ पे अपना मैसेज लिख देता हूँ, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, या तो आप ये कर दीजिए, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइल नॉट फाउंड, फाइल नहीं मिली है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने हैंडल कर ली है, स्टिल मैं आपको बताऊंगा आगे वाले मेथड को कि एक्सेप्शन आया है। फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो करवाने के लिए हम यूज कर सकते हैं थ्रो कीवर्ड, न्यू कोई सा भी एक्सेप्शन मैसेज।